श्रीमद्भागवतं पञ्चमस्कन्धः अध चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अधस्तात्स विदुर्योजनायुते स्वर्भानुको नक्षत्रवच्चादित्येके योषावमाद्वं प्रकत्वं चालपद भगवत् अनुकम्पया स्वयमशुरापशत शैंहिकेयो ह्यदर्हस्तस्य ताद जन्मकर्माणि सोपरिष्टाद् वक्ष्यामः यदतस् तरणेर्मण्डलं प्रतपतः तद्विस्तरतो योजनायुतमाचचक्षे 12,000 सोमस्य 13,000 रागूर्यकपर्वणि तद्य वदनाकृत वैराणुबन्धक सूर्याचन्द्रमसाववितावति तन्निशं यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषकं मुहुः परिवर्तमानम् अव्यवस्थितो मुहूर्तम् उद्विजमानश्चकितकृतय आरादेव निवर्तते ततुपरागमिति वदन्ति लोकाः। तदो तस्ताद् सिद्धचानर विद्याधराणां शतनानि धावन्मात्र एव तदो तस्ताद् यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुको प्रवादी यावन्मेघा उपलभ्यन्ते तदो तस्ताद् च योजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धं सभासंस्येन शुभर्णादय पदत्रीब्रिवर उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमेः यदा संनिवेश अस्वादानम् अवनेरभ्य तस्ताद् शब्द भूवि विविरा एकैकशो योजनायुत अन्तरेणायाम विस्तारेण उपकल्पृत्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं बादलमिति एतेषु हि पिलवक्ष्वर्गेषु स्वर्गात् अभ्यधिक कामभोगै ऐश्वर्यानन्दभूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यान क्रीटविकारेषु दैत्य दानव गात्रवेय नित्य प्रमुदित अनुरक्त कलत्रापत्य बन्धुशुकृत नुचर कृकतपदय ईश्वरादभ्य प्रतिगतकाम मायाविनोदा निवसन्ति येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्मिता पुरो नानामणिप्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर शभा चैत्य सत्यवारादय नादिभिः नागासुर मिथुन पारावत शुकसारिका कीर्ण कृतिम भूमिके विवरेश्वर गृहोत्तमैके समलङ्कृताश्च शकासति